Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha and welcome to winter as well. है ignore my alien voice. बर्तन को LLP Act रो जहाँ भी remaining things अच्छे हमें discuss करिया. Along with that, आज text book रो किसी concepts गुड़ा को देखिया जोड़ा लगी possibility अच्छे question आसीबा पाई. है हालांकि आमे जो अलगारे लेखुचु से जिनस रो आगा question आसुची है एथरे भी important जिनस जोड़ा अच्छे सेटा मु discuss करे. तो please pay attention. मोर कौन बास्ना पेन रही ना कौन मोर कलर पेन ये सब आम पढ़लु मु कहि खाली से अंडरलाइन कर है अंडरलाइन कर ए लाइन डा लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर प्री डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू द एलएलपी. तो डायरेक्टली जो बिट क्वेश्चंस जगह आसी पारिबो से गुडा को अंडरलाइन करोची. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर प्री डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी. तांकी जेतिकी कंट्रीब्यूट करथिबे खाली सेतिकी जिंस आगे कोन से मनंगर लायबिलिटी रे रहिबो. तांकी कंट्रीब्यूशन जहाँ भी अग्री करथिबे को एग्रीमेंट रे एलएलपी एग्रीमेंट रे तांकर कंट्रीब्यूशन डा तांकर लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन डा सेतिकी आगे रहयो. तो ताको हमें कहउछु कोन प्री डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. तो ए जिंस रो वर्ड टा आसी परबो. देखो कंपनी पई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहउची बट एलएलपी पई ए पेन खाइ दोची बट एलएलपी पई कोन रहयो ना एलएलपी एग्रीमेंट ता रहइबो हैला. कंपनी पे जिंदी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एलएलपी पे कोन रहयो एलएलपी एग्रीमेंट ता रहइबो हैला. दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा रे कि बोथ पार्टनरशिप फर्म और कंपनी रो कोन बेनिफिट गुडा को इनकनकेट हेगी थिबो हैला. कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म रो कोन बेनिफिट गुडा को इनकनकेट हेगी थिबो कोडा रे एलएलपी रे. देखो एलएलपी एक्ट रे देयर इज नो रोटेशन ऑफ पार्टनर्स. माडो खाइ दी जोन जा ए रुमाल टा फिंगी दी मु ऊपर गोची किछि कर पारो न तो. LLP has no provision for rotation of partners. No provision for rotation of partners. Rotation of partners. Hello. क्या टेक्स्ट बुक मत दे दे चले कोच. अलगा कंट्रीज कोडी कोडी सेडा अवेलेबल अछि. देखो यूनाइटेड किंगडम यूएसए हाँ रोटेशनली कहले बर्तमान को किए माने हमर जिंदे क्लास मॉनिटर होथिले बुझिरा ना 5-6टा थिबेले कहले ए वीक जदी ये होचे नेक्स्ट वीक से होचे सेमते हेगी सेला रोटेट हबो. सिंदी रोटेशन ऑफ पार्टनर्स रो कांसेप्ट एडी नाही. समस्त कोन दीटा डेजिग्नेटेड पार्टनर रहिया हमें पढिचो बाकी समस्त कोन नॉर्मल पार्टनर हिसाब रे रहिए. तापरे ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर ए जे सब बिट क्वेश्चंस रे आसी परियो. एलएलपी एक्ट जोड़ा भी अछि सेडा बिट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू रो बेसी इंपोर्टेंट. तार डायरेक्ट क्वेश्चन कोन हमें डिस्कस कर देचू हैला बिट क्वेश्चंस आगा बेसी इंपोर्टेंट. तापरे से कहछि कोन एडा अंडरलाइन करो वेरी इंपोर्टेंट हैला. से कोन करछि एलएलपी एक्ट 2008 जहां भी अछि सेडा कोड रो आनी चंदी को पर्टिकुलर ये को बेस करके आनी चंदी ना. फर्स्ट थिंग इज यूनाइटेड किंगडम रो एलएलपी एक्ट 2000 एंड सिंगापुर रो एलएलपी एक्ट 2005. बुझला मन रखिया जिंस एडा को एग्जाम पे बेसी दिन नाही तो संगे संगे मन रखिया पे ट्राई करो. देखो कांसेप्ट ऑफ एलएलपी रे सब जा कोन आसीबो हमरा फीचर्स जहां भी हमें पढिचो आज जाय से सब जिंस ओडा का आसीबो हैला. कहिथिली सेपरेट लीगल एंटिटी ता निज ना रे जहां भी आमे गोटे जिंस पढथिलु एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट काइंगे कहउछु. तो से पॉइंट गुडा को कहिची देखि पारियो. जदी किछि डाउट अछि पचारि पारियो. खाली लास्ट पॉइंट ता इंपोर्टेंट मार्क करो. नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स.
shielded from joint liability created by another's partner's wrongful business decision or misconduct. माने इमती नहीं कि जड़े पार्टनर भूल कले पूरा सब जिनस गुड़ा कौन कंपनी ऊपर को जीव कंपनी को भूल माने मानिबा बट ता माने नहीं कि आमे को सिंगल पार्टनर को ब्लेम करिया कहिगिरी जे भूल करछि ताको ब्लेम करिया जे भूल करछि सी आगा बेसी लायबल हबो मनर गोटे पार्टनर अछि माने गोटे एलएलपी फर्म अछि एबीसीडी चारटा पार्टनर डी भूल कर देला कौन 5 लाख रुपीस रो किछि भी से फ्रॉड की जहाँ भी मिसकंडक्ट कर देछि तो कंपनी ऊपर को जीव ए भूलडा डायरेक्टली का पचारि पारियोनी आमे पढलु से जिनसडा तो एलएलपी आगा दबो जार भूल हेछि माने ई मनर सी डी डा 5 लाख रुपीस देबार अछि तो सेटा एलएलपी थ्रू रे आगा दबो बट पैसा के दबो एलएलपी को डी आगा दबो बुझिला ना एबीसी को किछि एले लिंक नै आसो तो पूरा कंपनी नारे जीवो बट स्टिल कोन बेसी रेस्पोंसिबल रहिबो डी बुझिला ए पॉइंट टा केस ला क्वेश्चन आसी पारियो इज इट क्लियर कंफर्म करो वॉइस टा क्लियर अछि वॉइस टा क्लियर नै बट सुबुच नै ओके फाइन फाइन ओके ठीक अछि देखो बाकी एडा में पढ़थिलो ऑलरेडी एग्रीमेंट थ्रू रे गवर्न हबो कहिगिरी तापर देखो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल दिस इज आल्सो एन इंपोर्टेंट पॉइंट तको एडा चिंगुडी हिला the government introduced the LLP bill 2006 in Rajya Sabha on 15 December 2006 एडा भी डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारियो बाकी सब डेट इंपोर्टेंट नहीं बट राज्यसभा रे गवर्नमेंट केबे किछि बिल पास कला से जिनसडा होची इंपोर्टेंट टोटल केतरा चैप्टर्स अछि 14 चैप्टर्स एंड 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स सब जा देखिले इंपोर्टेंट लागियो बट किछि नहीं खाली जति कहूची सेतिया इंपोर्टेंट हैला कोन रे तळे पकी देलु खसियला देखो पार्टनर किए हे पारिबो से दीडा पॉइंट्स कहिचे हमको नंबर 1 होची इंडिविजुअल एंड नंबर 2 होची बॉडी कॉर्पोरेट नंबर 1 होची इंडिविजुअल एंड नंबर 2 होची बॉडी कॉर्पोरेट हैला ए दी जन जगह हे पारिबे कोन हमरो पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट से की डिफाइन करछि देखो एलएलपी registered under the act or incorporated outside India माने एटा कोनडा पढ़थिला हमें foreign LLP very good foreign LLP and a company incorporated outside India तो एटा कोन foreign company तो नॉर्मली हम एक्ट अंडर जहाँ भी आसी सेटा गुटे a foreign LLP and foreign company clear but does not include a corporation sole माने कोन sole trading company आसीबनी cooperative society आसीबनी body corporate registered not being a company or a LLP is a central government made by notification specify माने central government जोड़ा मना करछि सेडा भी आसियोनी हेले एडा टिके इंपोर्टेंट मार्क करो individual shall not be capable of becoming a partner केबे से पार्टनर हे पारियोनी ना जतोळ को से अनसाउंड माइंड हेथिबो हैला अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हेथियो किंबा एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हेथियो माने कहि देथि कि ये देबाळिया हे जेछि सेडा कहथिला ना हां देबाळिया हे जेछि किंबा कहउचंदी लोक जाकी ये देबाळिया हे जिवो हैला सेतळे से कोन एलएलपी रो पार्टनर हे पारियन हे जियो ता उधर ताको कोन पे आणे तू हिलो मूवी सेम पिंच सेम बट डिफरेंट सेडा देबाळे एते देबाळे हेले जे जैकेट एले पिन स्काई इज द लिमिट ट्रू और फॉल्स पचारछ ना कोन तापरे देखो ऑफेंसेस से कहिछि कि फाइन रेंजिंग बिटवीन 2000 रुपीस एंड 5 लाख रुपीस 2000 रो 5 लाख जे फाइन एप्लीकेबल हे पारियो हैला 2000 रो 5 लाख जे फाइन एप्लीकेबल हे पारियो
देखो एटा के सॉल्व करछि माने जहाँ भी एलएलपी रो किछि भी प्रॉब्लम जदी आछि कहले स्पेशल कोर्ट रे हबो एंड से कहछि कि से स्पेशल कोर्ट रे के थाउछि सेशंस जज और एन एडिशनल सेशंस जज जोडा कि 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और मोर टा गवर्न करिवे आ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर अदर ऑफेंसेस हला एती खाली मन रख तार जहाँ भी भूल भाल हम एलएलपी एक्ट थ्रू रे तो सेटा किए डील करछि सेशन जज किंबा एडिशनल सेशन जज को जिनस पई ना इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 इयर्स और मोर एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फॉर अदर ऑफेंसेस बुझिला मिनिमम नंबर केते 2 मैक्सिमम डा बट जदी मिनिमम नंबर टा कोन रेड्यूस हे जैथियो बिलो 2 आ 6 मंथ्स हे जैछि तांके कंटिन्यू करू चंदी the person who is the only partner of the LLP during the time it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it's carrying on business with him alone shall be personally liable माने से जानी कि कंटिन्यू करूची 6 मास ऊपर हे हलानी हला जानी कि कंटिन्यू करूची तो सी आगा लायबल हबो डेजिग्नेटेड पार्टनर देखो एटलिस्ट केतरा डेजिग्नेटेड पार्टनर अछि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहयार अछि आ जणे कोन रहयार अछि रेसिडेंट रहयार अछि रेसिडेंट इंडियन आउ किछि दरकार नै थरे एडा देखो फॉर्म नंबर टा मन रखो फॉर्म 9 का पे जदि से इंटरेस्टेड अछि डेजिग्नेटेड पार्टनर हेबा पे तो ताको को फॉर्म देबार अछि डेजिग्नेटेड पार्टनर पे फॉर्म 9 दीडा जिंस से कहिछि देखो an individual shall give his consent to become a designated partner in form 9 the particulars of an individual who has given his consent to act as designated partner shall be filed in form number 4 माने एडा फॉर्म फाइल हबो इंडिविजुअल द्वारा एडा फाइल हबो एलएलपी कंपनी द्वारा माने कंपनी फाइल करियो बुझिला तापरे एडा तो इंटरेस्टेड पार्टी माने से इंटरेस्ट अछि कहि कि फॉर्म नंबर 9 रे करला बट ताकू जेतळ को कंसेंट माने एलएलपी भी एग्री हे लगी आको हमें पार्टनर करियाली ते से कोन फॉर्म नंबर 2 ऑफ फीस पेमेंट करियो बुझी पारछ ना सी फर्स्ट इंटरेस्टेड अछि कहि गिरी फॉर्म नंबर 9 रे कहिबो जदी एलएलपी मानी जाउची तो फॉर्म नंबर 2 प्लस फीस दबो आ एलएलपी को फॉर्म रे कहियो तार डिटेल उडागो फॉर्म रे कहियो हैला डिस्क्वालिफिकेशन देखो तुमको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आज जाए पचारनी कि आरटीपी एमटीपी रे भी कहिनी बट कहूची पूरा अगेन वेरी अनसर्टेन तो खाली मन रखिया पे तो से कहूची कि जदी प्रीसीडिंग 5 इयर्स हैड बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट माने कोन हेची देबाळिया हेगिरी 5 वर्ष हेची 5 वर्ष तळे माने लास्ट 5 इयर्स भितरे केबे गोटे इंसॉल्वेंट जदी हे जेची तापरे कोन सस्पेंड्स और हैज एट एनी टाइम विद इन द प्रीसीडिंग 5 इयर्स सस्पेंडेड पेमेंट टू हिज क्रेडिटर्स एंड हैज नॉट पेड कंपोजिशन विद देम माने क्रेडिटर्स को पेमेंट करिनी किबा सेमान सहित गोटे कथा को राजी हेनी बुझिला एडा मध्ये 5 इयर्स तापरे कोन नॉट लेस देन 6 मंथ्स पे से इम्प्रिजनमेंट हेची मॉरल टर्पिट्यूड पे हला मॉरली किछि भूल करची जा लगे कि ताको जेल रे पके चंदी हला तापरे has been convicted by a court of for an offence normally भी जदी offence involving section 30 जदी बेसी बड़ भूल करिगिरी जदी से कोन इम्प्रिजन हे जे then also he will become disqualified to act as an LLP partner किछि डाउट अछि कार okay fine liabilities of designated partners देखो designated partner का काम कोन रहबो he is responsible for doing of all act matters and things as required है ना तापर से कहया फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट रिपोर्ट एक्सेट्रा एडा इंपोर्टेंट मार्क करो
फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट रिटर्न्स के करि पारियो ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करि पारिए समस्ते करि पारिएनी एंड सेकंड थिंग होची लायबल टू ऑल पेनाल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी लायबल टू ऑल पेनाल्टीज इम्पोज्ड ऑन द एलएलपी जदि वैकेंसी होची तो विदिन 30 डेज से कौन करियो अपॉइंट करियो तो जदि किए ले अपॉइंट हेलानी 30 डेज भितर तो कौन ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ईच पार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर पनिशमेंट से कौन कौन 10,000 विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs ए पर्टिकुलर जिनस है डेजिग्नेटेड पार्टनर ये पाई तो इनकॉर्पोरेशन देखो फर्स्ट थिंग होची नेम रिजर्वेशन करिवो तापरे सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स देन रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी गुड थरे पढ़ो किछि डाउट थिले कहबी फर्स्ट गुटे गुटे लेक्चर हिच ना एलएलपी रो ते गुटे लेक्चर रे सब कवर हेला एग्जाम रे जहा भी आसी दीडा हिचे गुटा का ठीक से हिच फर्स्ट लेक्चर टा हमर रिकॉर्डिंग हेन लिखि देइथिले जो ये सब अंडरलाइन करिया क्लास टा आसी केबे कॉलेज परीक्षा केबे जीवन परीक्षा कौन करिया कॉलेज परीक्षा एटलीस्ट यू गेट अ डेट शीट कि हमको ए टाइम भितर प्रिपरेशन रो टाइम मिल और जीवन परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर्स है हाँ सरप्राइज टेस्ट किसी डाउट अच्छी करो नहीं register देखो the registrar shall maintain a register of LLP in which names of the LLP shall be entered how LLP identification in consecutive series LLP identification माने कौन similar to director identification number तो तापाई स्पेसिफिकली गोटे नंबर टा दिया होची से कंपनी पाई दिस इज LLP IN बुझिला रजिस्टर्ड ऑफिस रो काम कोन आको सब कम्युनिकेशन और नोटिसेस गुडा को आसीबो हैला आउ से कहूँ कि जदि वन्स रेजिस्ट्रेशन हेला तो निजर गोटे कॉमन सील थी सी जगह किणी पार प्रॉपर्टी किणी पार बिकी पार का केस कर किंबा किए हेले सेमानन ऊपर केस करि पारिबे किंबा जदि किछि भूल भाल हला तो कोन सेमानो पेनल्टी भी पड़ी पारियो तो रजिस्ट्रेशन हेले एतिकी सब जिंस एक्टिवेट हे जिवो बाकी नेम इनवॉइस किछि दरकार नहीं दरकार नहीं जगह अच्छा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टा तमरा क्वेश्चन आसुची ब्रा या एडा क्वेश्चन आसुची डाकी थिले ना ऑलरेडी हे जेइची देखो कोन थिला सेडा आमे पढथिलु गुड थरे रिवाइज करिया अरे का का जणा पड़ो मते तते जणेले कहि दानी समस्त हाँ दीड़ा जाथिला ना देख स्नेह सी केतटा पढ़े देलेनी एडा कोन हैला गाबरा रे रे हाँ भूल मार देथिले यस दुष्च भूल मार चिला आथरे काई लिखबो जे मोड स्विंग को जो एडा बुझला ना हाँ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस रे मो कोन कहितली नोटिस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस टा आरसी को देबा हमें कोन फॉर्म नंबर 15 रे विद इन 30 डेज हैला तापर जदी चेंज प्रोवाइडेड सेडा केबे हे पारियो जदी सेडा पार्टनरशिप एग्रीमेंट रे अछि देन ओनली सेडा हे पारिबो नले हे पारियोनी जदी चेंज टा सेम स्टेट भितरे होउछि तो जदी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नाही तो कार कंसेंट दरकार सब पार्टनर्स रो कंसेंट दरकार
आ जदि स्टेट बाहर होचे तो पार्टनर्स प्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जे भी अछि सेमानंगर परमिशन गुडा को दरकार आ सेटा हैला परे कोन गोटे नोटिस देबार अछि बिफोर फाइलिंग टू द आरओसी कि आम एटा करछु कहिगिरी आ कोन न्यूज़पेपर रे पब्लिकेशन करियार अछि कि रजिस्टर ऑफिस टा कोडी लोकेट हेगी अछि से लोकल न्यूज़पेपर रे आमे कोन पब्लिश करियार अछि बिफोर 21 days ऑफ फाइलिंग टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एटा पढ़ देथिला आमे ऑलरेडी एटार क्वेश्चन भी आसुची एग्जाम रे बारंबार तो इंपोर्टेंट मार्क करियो रे पता ले देह भल नहीं काई सुननो कथा एटी देखो से कहूची एवरी एलएलपी मस्ट हैव द एक्रोनिम एलएलपी एज द लास्ट वर्ड्स एलएलपी हेगी रहयर अछि कोन करछ हैला चेंज ऑफ नेम रे खाली फॉर्म नंबर टा अंडरलाइन करा अछि दरकार नै हैला एते डिटेल से पचरेनी सेडा कंपनी विषय पचारथिला चेंज ऑफ नेम आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट से गुडा को या एडा इंपोर्टेंट देखो a person shall cease to be a partner of LLP on the following grounds केबे ताकू कोन आमे पार्टनरशिप रो काढी देबा केबे ऑब्वियसली से मरियले और रखी कोन करिया किबा LLP का मरियले आ ताकू डाकी कोन करिया किबा कोन अनसॉर्नमेंट और लास्ट वन इज आवर फेवरेट वन देबाळिया इनसॉल्वेंट ए तीनटा हेले कोन है पाठ पूरा पाठ इस पैसा पाठ नहीं सेते पे पढ़ बसी रे मोर तंटे नहीं नाक नहीं कौन करी पूरा देबाळिया तमे एडजुडिकेटेड इनसॉल्वेंट मो ऑलरेडी इनसॉल्वेंट बुझिला ना सेडा एडजुडिक इनसॉल्वेंट नले करला पर कथा देखो when a person has ceased to be a partner of LLP is to be regarded as still being a partner unless the person has noticed that the former partner has ceased to be a partner notice that the former partner has ceased to be a partner of LLP has been delivered to the register तो देखो गुटे जिंस से कहया चाहूची जदी लायबिलिटी टा केबे सरी जिवो जदी से पर्सन जानिला कि ए पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट कंटिन्यूइंग नले आरओसी जानला कि ए पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट कंटिन्यूइंग हैला ए दीडा केसेस रे कोन हबो तार लायबिलिटी टा सीज हे जिवो तापरे देखो when a partner of LLP ceases to be a partner तो कौन हबो he is entitled to receive from the LLP amount equal to the capital contribution of the former partner actually made not a right to share in the accumulated profits after the deduction of accumulated losses एटा टिके important मार्क करो हैला भीतर भीतर बिट क्वेश्चन उडा आसी परियो ना दैट्स व्हाई पानी जा किछि दरकार नहीं देखो एटा हम पढ़थिलो सबुड बिजारिया पॉइंट ता मन अछि ना केबे से पार्टनर जदी जानला कि आर अथॉरिटी नहीं देन आल्सो से कोन काम करला कहिले से पर्टिकुलर पर्सन जे भी अछि ता एक्ट पे ये केबेले बाध्य नाही सब जिंस जगह में ऑलरेडी पढ़ी छु पनिशमेंट भी पढ़छु तू ना आले मु किस करी पढ़ी दी आउथरे कह दरकार नहीं ना पढ़िले सोई पड़ियोती मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स देखा relating to its affairs for each year and for filing of annual statement of accounts and solvency with the register the accounts of LLP shall be audited the central government is given power to exempt any class से कोचे कोन shall keep book of accounts which are sufficient to show and explain the reasonable accuracy at any time financial position how enable the designated partners to ensure that any statement of account and solvency prepared complies with the requirements of the act तो से कौन कहूची कौन मेंटेन कर रहा से कहले देखो फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट
सॉल्वेंसी स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी माने से देबाळिया नाई कहिगिरी ताको प्रूफ देबार अछि एजा सब कोन हबो अगेन ऑडिट हबो आ जदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिले से एग्जाम्प्ट भी करि पारिबो नोटिफिकेशन बाहर करिगिरी आ जदि एजा जो बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करछि सेडा दीडा जिंस प्रूफ करे अछि ए सुनो दीडा जिंस प्रूफ करे अछि गुटे होछि तार फाइनेंशियल पोजीशन ठीक अछि आ कोन तार स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जहा भी अछि और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जे भी अपॉइंट हेगे अछंदी सेमानकर सॉल्वेंसी रा ठीक अछि कहिगिरी दे आर इन अ गुड पोजीशन टू मेंटेन द एलएलपी एंड मेंटेन देयर पोजीशन एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन द एलएलपी बुझिला बुक ऑफ अकाउंट्स देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस्थिला केबे आस्थिला एग्जाम रे रिसेंट क्वेश्चन थिला पर केबे उडे नाइस केबेडू कौन कानर कानर स्कैनर को मतलब स्कैनर को कानर कहछ 2013 MTP 2017 RTP एग्जाम रे मध्ये आस्थिला मते दुसुनी म अंध होइली कौन कहला पार्टी आखि नहीं तंटी नहीं स्नेहू एते जोर से माडो खाऊ तू बहुत जोर बाडे कुछ दीदी ने गले बाडे मात्र आज नहीं देखो बुक ऑफ अकाउंट्स रे कौन कहे पर्टिकुलर ऑफ ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड कौन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रहिबो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट रहिबो हाउ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहिबो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ कोन एनी अदर पर्टिकुलर्स व्हिच पार्टनर्स में डिसाइड जदी से माने आ किछि इंक्लूड करियो चाहौ छनी सेडा रहयो बट मेजर कौन रहयो फर्स्ट थिंग होची रिसिप्ट एंड पेमेंट एसेट एंड लायबिलिटी आ कोन रहयो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड इन्वेंटरीज वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो तमरा कोन अकाउंटिंग कॉस्टिंग सब बही रे पूरा जेति कि जिंस अछि सब जगह आरो बुक ऑफ अकाउंट्स रहयो आउ जदी चाहिने से किछले ऐड करि पर बुझला देखो फॉर्म नंबर 8 एडा गुड थर आस्थिला एडा वर्कबुक रे मो देखिची एलएलपी रो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी डा अछि सेडा से फॉर्म नंबर 8 रे फाइल करियो हैला विदिन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months इन द फाइनेंशियल इन व्हिच जहा भी प्रिस्क्राइब हेच के साइन करियो शैल बी साइंड ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी बाय इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बाडे गी तम दी जोड़गो लेखो ना को फॉर्म नंबर 8 साइन के करियो वेरी गुड साइन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देखो सब दिन न सुनिया पिला सीए सुनछि आज तो मन लाज टिके नै इमान तो मते करथिले से दिन आ कोन जे लूड़ो भीतर देखो LLP रो auditing केबे हबो if the turnover of LLP does not exceed in any particular 40 lakhs and whose contribution does not exceed 25 lakhs shall not be required to get its account audited तो डायरेक्टली कोई था ना जदी LLP रो turnover टा greater than कोन 40 lakhs और contribution माने each partner रो contribution is greater than 25 lakhs हेले कोन audit of the accounts is required बहुत important एडा मन रखो डायरेक्ट क्वेश्चन पचारछि से केस लो देखो से कहछि but if the partners of such LLP want to get the accounts audited and the same shall be audited in accordance with the rules जदि से मानकर इच्छा अछि माने रिक्वायरमेंट नै बट इच्छा अछि ऑडिट करिया पे तो से माने करै पारे इट इज वॉलंटरी तांको इच्छा हैला A statement by the partners to the effect that the partners acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the act and preparation of book of accounts and a certificate in form number 8 है जो statement of our account and solvency अच्छी तो से माने चाहिले कोन ऑडिट करे पारे बट रिक्वायरमेंट कोन हमरो टर्नओवर इज ग्रेटर देन 40 lakhs and contribution is greater than 25 lakhs है ना ऑडिटर देखो
Auditor shall be appointed केमती हबो The designated partners may appoint an auditor at any time for the first financial year but before the end of the first financial year माने year भितरे करियर अछि appoint हला at any time for the first financial year 30 days prior to the end of financial year or the casual vacancy होची including in case when turnover exceeds the limit to fill up the casual vacancy caused by removal of an auditor तो सेमानंगर इच्छा से designated partners जे भी अछंदी year टा end हैला भितरे कोन करिवे appoint करियर अछि किबा casual vacancy ना fill up करियर अछि जदि नुआ ऑडिटर के अपॉइंट हे पारनी तो प्रीवियस ऑडिटर जे भी अछि सियागा हेची कहिया हम डीम करिया एलएलपी एग्रीमेंट रे प्रोवाइड हेथियार अछि कि ताको हम फंक्शन करियाबो ये दोछु कहिगिरी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स हैव डिटरमाइंड दैट ही शुड बी रीअपॉइंटेड ए दीडा कंडीशंस फुलफिल हेबार अछि रेम्यूनरेशन ता देखो के फिक्स करियो फिक्स्ड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और लेड डाउन इन द एलएलपी एग्रीमेंट किछि डाउट अछि एबे जे ओके फाइन एलएलपी एग्रीमेंट रे जो प्रोसीजर ता अछि ताकु धरी कोन करिया हमें ताकु चाहेले रिमूव करि परिया है ना रेजिग्नेशन देखो an auditor of an LLP may resign his office by depositing a notice in writing at the registered office registered office रे कोन तार notice of resignation ता से दे परिबो not less than 14 days before the end of the time allowed for appointing the new auditor केबे भितरे दे परियो not less than 14 days before the end of the time allowed स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस सहित देले आगे सेटा वैलिड हबो माने से कोन पे रिजाइन करिया चाहूची से जिनसडा सेडी थिबार अछि है ना देखो ऑडिटर टर्म केबे एंड हबो डेट ऑन व्हिच नोटिस इज डिपॉजिटेड ऑन सच लेटर डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस माने जदी डेट किछि मेंशन से करछि किंबा जदी न डिपॉजिट हैला दीडा जार जोडा लेटर अछि से डेट रे कोन तार टेन्योर टा एंड हे जिवो ऑटोमेटिकली क्लियर एनुअल रिटर्न देखा फॉर्म नंबर 11 वेरी इंपोर्टेंट ए जो रिटर्न फाइलिंग और जो स्टेटमेंट फाइलिंग अच्छे से उडार फॉर्म नंबर उडा को वेरी इंपोर्टेंट हैला देखो से कौन कोची पॉइंट देखो एनुअल रिटर्न ऑफ एलएलपी हैविंग टर्नओवर अप टू 5 crores during the corresponding year or contribution up to 50 lakhs shall be accompanied with a certificate from the designated partner or the signatory to the annual return to the effect that the annual return contains true and correct information जदि सेमानंगर टर्नओवर एंड ए जो लिमिट अछि से लिमिट भितरे जदि रहुची कहिले सेमाने गुडे स्पेशल स्टेटमेंट दबार अछि के दबो ना डेजिग्नेटेड पार्टनर दबो कि जहां भी सेमाने फाइल करछन दैट इज ट्रू एज टू देयर नॉलेज सेमानको नॉलेज हिसाब रे जहां भी सेमाने फाइल करछन इट्स कंप्लीटली ट्रू इनदि कहि कि तांके गुडे सर्टिफिकेट दबार अछि वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट म आगुडू वेरी इंपोर्टेंट मार्क करछि काहेले दि तीन थरे से पचारछि एग्जाम रे आ बाकी सब केसेस रे कोन हबो ना सर्टिफिकेट फ्रॉम ए सीएस इन प्रैक्टिस कि से वेरीफाई करछि कहिगिरी जदि ए लिमिट जहां भी अछि से लिमिट कंप्लायंस से जदि फॉलो करछि हैला से भितरे जदि से आसुछि कहिले से सर्टिफिकेट दबो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देबे नले के दबो कंपनी सेक्रेटरी दबो हैला लास्ट टॉपिक देखो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स से कहछि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी अवेलेबल विद द रजिस्ट्रार फॉर इंस्पेक्शन कोडा कोडा इंस्पेक्शन करि परिबे ओनली दीस 4 डॉक्यूमेंट्स कैन बी इंस्पेक्टेड only these 4 documents can be inspected first thing hochi incorporation document tapare names of partners and changes if any made therein statement of accounts and solvency and the annual return clear penalty against सेडा का कहिछि 5 लाख रु जहां भी ये हबो कहिरे ठीक अछि एलएलपी रो तमरो लास्ट क्लास रहिबो नेक्स्ट जहां भी रहयो हैला से भितर हमें डिस्कस करिया कोन कन्वर्शन रो टॉपिक ता
एंड एथरे जदि किछि रिमेनिंग जिंस अछि आ जदि तमे किछि एक्स्ट्रा जिंस जानिबा को चाहछ एंड इन द सेम क्लास वी विल बी हैविंग कि बाकी सब जिंस रे जदि किछि डाउट अछि कहले पचरि पारियो बिकॉज दैट विल बी योर लास्ट क्लास बिफोर द एग्जाम तापर गुटे वीडियो अपलोड होबो जोथरे कि हमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करबा ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट एंड टॉपिक ठीक अछि थैंक यू